हाय गाइस, गुड इवनिंग। स्टार्ट करें। आवाज आ रही है तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ओके, सो लास्ट टाइम जो है वी हैड डन अ फ्यू ऑफ दोस प्रॉब्लम्स, राइट? बेसिकली बोल्ट्जमैन फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया था एंड एक दो प्रॉब्लम्स किए थे उस पर, आई थिंक वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला। तो अब एक काम करते हैं, लेट्स मूव टू तो बेसिकली आइडिया ये था कि बोल्ट्जमैन फैक्टर जो है इज अ प्रोबेबिलिटी, or it's proportional to the probability of having a certain energy, and that energy can come from any source. Basically it's a just a probabilistic factor related to having a certain amount of energy. That energy could be potential in, if you're in a potential field, electrical potential energy or gravitational. I think last time में वो gravitational potential energy का example किया था, particles का जो distribution होगा। वो प्रॉब्लम जो होता है तुम लोग प्रॉब्ली तुम लोगों ने केटीजी या इसके टाइम पे किया होगा, पीवी गोस टू एनआरटी के टाइम पे, मे बी हम लोगों ने किया था क्लास में, आई डोंट रिमेंबर। एटमॉस्फेयर का डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ हाइट फाइंड करना है, गिवन दैट द लेट्स से द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो उधर हम लोग न्यूटोनियन तरीके से करते हैं कि फोर्स लिखते हैं, प्रेशर लिखते हैं, एक लेयर कंसिडर करते हैं, उस पर पी प्लस डीपी करके, एंड वी फाइंड आउट द डेंसिटी और द पार्टिकल डेंसिटी और व्हाटएवर. That same problem can also be done with the Boltzmann factor. You can simply state that the probability of being at a certain height, which will control the potential energy mgh, will be correlated to the relevant Boltzmann factor, right? The probability that you are at this particular height, and then you can find out whatever needs to be found out. I think udhar bhi exponentially aata hai. If you do it by your regular balance of forces, then you get an exponential distribution. And over here you can in fact almost directly state that the number density at h will be the number density at 0 times this, right? So that's what this does. अब इसका जो एक दूसरा जो मेन इसका यूज है, one of the primary uses of the Boltzmann factor is in basically analyzing a bunch of particles moving around, not in a field, right? So this is the scenario where there is no field. So there is no gravity, there is no potential. I think problem हम कर रहे थे central potential का, right? Last time मैंने तुम लोग को दिया था end में कुछ type का potential function है, AR cube या something, and you can find out what is the most probable distance at which particles will be found, or what is the most probable energy that they might have, something like that, right? So then what we can do is we can basically apply the Boltzmann factor to figuring out the Maxwellian distribution for speeds of particles in a container, right? Assuming, of course, that these are point particles and they have perfectly elastic collisions with each other. So this is also an example of the Boltzmann factor. What we are doing here is that we are saying that the kind of energy that they are allowed to have now is only kinetic energy. It's a bunch of particles in a container, and each particle can only have kinetic energy. So even then, it is still true that let me just write that you have point-sized particles in a container, and no field. So therefore, they have only kinetic energy.
right? But obviously the Boltzmann factor still applies. And you could say that the probability that the particle has a certain speed in the x direction vx will be proportional to the relevant Boltzmann factor. You write the kinetic energy there and you fit it into the Boltzmann factor, right? This is the probability of having vx speed in the x direction is proportional to this factor, right? Similarly for y and z will be basically the same kind of thing. सर सो जब वो पूरा वो फंक्शन बनाया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाला, तो उसमें स्टार्ट इधर से किया था कि लाइक स्टार्टिंग से आया और ये निकल गया, मतलब एग्जैक्टली बोल्ट्जमैन ने कैसे किया था वो बोल रहे हो, या ऐसे करते हैं अब ऐसे करते हैं? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये जो फंक्शन है ये उसमें रहता है ना, वो जो बड़ा सा इक्वेशन रहता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का, वो तो वो जो इक्वेशन है उसको डेराइव करने में ये फैक्टर यूज हुआ कि वो इक्वेशन के डेरिवेशन से ये फैक्टर पता चले? वो इक्वेशन के डेरिवेशन से फैक्टर पता चला। देखो हिस्टोरिकली तो ये है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन पहले आया था और बोल्ट्जमैन फैक्टर जो है उसका जनरलाइजेशन है जो बोल्ट्जमैन ने किया। मैक्सवेल ने दूसरे कंसिडरेशन से वो डिराइव किया था जो कि ये नहीं है जो हम फॉलो कर रहे हैं। मैं तुम्हें उसका एक तरीके से आई वुड से लॉजिकल ऑर्डर बता रहा हूँ, लेकिन हिस्टोरिकल ऑर्डर जो है वो ये है कि पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन आया without the sort of direct understanding of this factor or what role it plays in various situations. मैक्सवेल का डेरिवेशन अलग है, वो एक अलग स्टोरी है कि कैसे उसने किया उसको, बट and he did it for speeds of particles. बोल्ट्जमैन जो है उसमें से, और in a sense using independent reasoning, you could say extracted the Boltzmann factor out of the Maxwellian distribution. He didn't really extract it out of that directly, but he basically arrived at this factor. जो हमने डेरिवेशन किया था, if you remember statistical temperature का जो डेरिवेशन किया था, that's Boltzmann's thing. तो उसने उस तरीके से किया, he started from the idea that there is like this situation and we have a probabilistic scenario. That whole macrostate microstate idea is due to Boltzmann. So he arrived at it, and this fits into a potential energy context, a kinetic energy context. Its application to a kinetic energy context in particular, and then some ideas about how particles might be moving in space, मैं बोलता हूँ अभी आगे जाके, is what the Maxwell-Boltzmann distribution is. So it's a use case of the Boltzmann factor, but historically it came earlier without the generalized idea of the Boltzmann factor. Okay, sir. Thank you. तो ऐसे Z में भी तुम लिख सकते हो। अब अगर इसको like I said, if you want to make it a proper probability for any of these Vx, Vy, Vz, तो नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो अगर मान लो मैं PVx को नॉर्मलाइज करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि आई वुड हैव टू से something like PVx is some constant times the relevant Boltzmann factor, right? And then I would say that since this is now a true probability, its integral over the entire possible space of Vx's should be 1. And if we do that and we integrate it, we should basically get integrate it and equate it to 1. We will basically be able to solve for C in reverse, and then we can put the C back here. We'll have to say that PVx dVx by integral over, since Vx is a velocity, it should be integrated over all the entire possibilities, and that should be 1, right? So we'll basically give you the value of C, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास जो अपना ये रहता है
इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 kBT 3/2 होगा ना, तो मुझे 3 चाहिए। बेसिकली कुछ वैल्यू आ जाएगी इसकी, आई विल राइट इट डाउन, आई विल लुक इट अप एंड राइट इट डाउन एंड यू विल गेट सम वैल्यू, राइट। तो ये तुम्हारे पास PVX आ गया। तो PVX आ गया, तो अब तुम बेसिकली having a probability in having the probability of having a certain speed. Technically, again, keep in mind that it doesn't really give you the probability of having a particular Vx. It gives you the probability of having a speed between Vx and Vx plus dVx, right? It gives you a probability, infinitesimal probability, that PVX dVx is itself the probability. इस हिसाब से एक्चुअली मेरे को इसको P नहीं बोलना चाहिए. Maybe that's not such a great choice of symbol. तुम लोग समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? ये वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का वैसा टाइप का? हाँ, उस टाइप का ही चीज है। इसको इंटीग्रेट करके प्रोबेबिलिटी मिलती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी कहते हैं उसको। तो मतलब आई शुड से समथिंग लाइक F, this is not itself the probability, but if you want to talk about the probability of having speeds between Vx and Vx plus dVx, then F Vx times dVx is the probability. This is the probability of having speeds, probability of having speeds between Vx and V plus dVx, right? And so naturally, when you add up all these probabilities, then you are adding up over all possible values, and then you should get a 1. ठीक है, make sense? सॉरी, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो e to the power minus x स्क्वायर का ये हम नहीं करेंगे। ज्यादातर इससे रिलेटेड जो इंटीग्रेशंस हैं वो काफी ट्रिकी होते हैं। एक दो टाइप के हैं, इनमें से मैं बोलता हूँ आगे, जो कि हम कर सकते हैं या जिनके रिजल्ट्स हैं जो तुम देख सकते हो। कुछ कुछ ऐसे हैं जो अलग टाइप के फंक्शंस पे डिपेंड करते हैं, तो उनकी पूरी इंटीग्रेशन की सेपरेट थ्योरी है कि ऐसे इसको कैसे इंटीग्रेट करें, इन अ सेंस दैट्स लाइक अ सेपरेट थ्योरी इन मैथमेटिक्स एज वेल. So most of these are not, I mean, they are integrable. I'm not saying they're not integrable, but they require a bit more mathematics than we are going to need, right? And so जो relevant है वो मैं बता दूंगा, कुछ results हैं वो तुम याद रख सकते हो. और problems भी अगर आता है उस पे तो वो उस टाइप का ही आ सकता है जिसमें वो ready-made result fit हो जाएगा more or less. Like once you get the integral into that form, where you recognize it as okay, this is that thing, and then you can put that value, right? तो ये मैं बता ही देता हूँ ये क्या होती है, वैल्यू देख लेता हूँ मैं रुक यहाँ पे चालू है। सर इसमें कुछ पाई वाई भी आता है ना? हाँ, पाई आएगा और रूट आएगा। मुझे लगता है रूट पाई m आना चाहिए, ताकि बिकॉज अल्टीमेटली जब मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वो आना चाहिए जो हमारा स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, राइट? तो 4/√पाई। लेट मी जस्ट क्विकली चेक। पाई पाई आएगा 2π kBT/m आएगा रूट के साथ, ठीक है। 2π kBT/m with the root, so that you have the FVX function in full as root of 2π kBT/m and the Boltzmann factor for that. और ऑब्वियसली ऐसा ही जो है वो y और z में भी होगा, कोई डिफरेंस नहीं है, बस सब्सक्रिप्ट चेंज कर लो, vx की जगह vy और vz लिख लो, ठीक है? करेक्ट। तो मैंने उल्टा लिख दिया एक्चुअली, क्योंकि ये c की वैल्यू, ये 1/, ये इंटीग्रल की वैल्यू आती है, c की वैल्यू नहीं आती, ये 1/c है। मतलब c, ये इंटीग्रल की वैल्यू ये है, तो बेसिकली ये c टाइम्स जब करेंगे तो c 1/c की वैल्यू है, c डालेंगे तो उल्टा कर दो इसको, ठीक है?
8 आ जाएगा। तो ये ऐसा नहीं कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तुम याद रखो इसको, लेकिन इससे कुछ रिजल्ट्स निकाल सकते हैं जो याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। अभी हम एक प्रॉब्लम करेंगे सर, तो हाँ सर इसमें वी स्क्वायर नहीं होता इन पे तो? नहीं, इसमें वी स्क्वायर नहीं है। वी स्क्वायर लाइक कहाँ से? हम लोग को जो सिखाया था केमिस्ट्री में, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाला जो ग्राफ आता है, तो उसमें अलग फंक्शन होता है क्या? नहीं, तुम क्या कह रहे हो? मैक्सवेल मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ये। ये अलग चीज? ये अभी केवल एक्स डायरेक्शन में वी एक्स होने का डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, ठीक ठीक है। पूरे सबका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना, सारे वेलोसिटीज हाँ, का? पूरे स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हाँ, है, स्पीड का नहीं है, हाँ। स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन है। यस। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इसका एक दो चीज बता देता हूँ, फिर हम एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब अगर मान लो मैं बोलूं कि अब अगेन कीप इन माइंड कि जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था तुमको कि अगर कोई फंक्शन दिया है तुम्हें कोई वेरिएबल का, जैसे वी एक्स का एक फंक्शन है, ये बेसिकली एक तरीके का प्रोबेबिलिटी फंक्शन है कि जिसकी वी एक्स होने की क्या प्रोबेबिलिटी। अब अगर तुम वी एक्स की ही कोई प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करना चाहते हो कि एवरेज ऑफ वी एक्स, या एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ वी एक्स, या एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ वी एक्स, अब वो क्यों करना होगा वो अलग बात है। मान लो तुम फाइंड करना चाहते हो कि एक्स डायरेक्ट टोटल काइनेटिक एनर्जी का एक्स डायरेक्शन में कितना है। आई मीन दैट्स अ मीनिंगलेस स्टेटमेंट बिकॉज काइनेटिक एनर्जी स्केलर होता है। बट लेट्स से यू वांटेड टू लाइक सेपरेटली वांटेड टू लुक एट कि भाई टोटल एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्स में कितनी है, इन सम सेंस मतलब एक्स की तरफ से कितनी मिल रही है। तो यू वुड नीड हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर इन अ सेंस, but obviously you're not looking at one particle here, right? It's a collection of particles, so you can't simply say half m vx square. You would say half m vx square and then you would need an average over it. तो वो vx square का एवरेज होगा, वो हाफ m तो कांस्टेंट्स है। तो अब तुम्हें vx square के एवरेज की जरूरत पड़ सकती है, या किसी और कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है vx के क्यूब की जरूरत पड़े, राइट? तो वो एक जनरलाइज्ड मैथमेटिकल आइडिया है जो मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि अब अगर मुझे vx के एवरेज की जरूरत है, या vx के मॉड के एवरेज की जरूरत है, या vx के स्क्वायर की एवरेज की जरूरत है, या उसके क्यूब की एवरेज, या उसके किसी भी फंक्शन की एवरेज की जरूरत है, तो मेरे को उसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे vx स्क्वायर का, अगर मुझे vx स्क्वायर का एवरेज निकालना है तो आई वुड हैव टू मल्टीप्लाई vx स्क्वायर टू f vx एंड देन इंटीग्रेट इट ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यूज। इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम हमने किया था, मैंने तुम्हें डिस्क्रीट एग्जांपल भी बताया था और फिर कंटीन्यूअस एग्जांपल भी बताया था। तो लेट्स से इफ आई वांट टू फाइंड कुछ चीजें, तो देखो कुछ ऑब्वियस चीजें हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं vx का ही एवरेज कैलकुलेट करूं तो तुम्हें क्या लगता है उसकी वैल्यू आएगी? ऐसे ही बता सकते हो तो बिना इंटीग्रेशन के। एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, रैंडमली मूव अराउंड कर रहे और हैं। जीरो? जीरो जीरो आएगी, आएगी? बिल्कुल सही बात है, जीरो आएगी, क्योंकि तुम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जब इंटीग्रेट करोगे उसको, तो obviously it's as likely to have any speed in the positive x direction as the same speed in the negative x direction. So the average of vx will be 0. This, by the way, is also the average of vy and is also the average of vz. Fine. सर आप एक बार प्रीवियस पेज दिखाओगे सर? उसमें वो वी एक्स है या फिर एफ ऑफ वी एक्स है? कहाँ पर? किधर? ये f of vx है, वो लिखना भूल गया मैं, इरेज किया था p को, वहां पे रह गया, f of vx है। बट f of vx का तुम मतलब समझ रहे हो, राइट? तुम लोग f of vx इटसेल्फ प्रोबेबिलिटी नहीं है, f of vx dx, f of vx dvx प्रोबेबिलिटी है, राइट? यस। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है,
तो ये ऑब्वियसली 0 हो गया। अब हो सकता है कि मुझे मान लो Vx का मॉड करना है, हम एक प्रॉब्लम करेंगे उसमें आएगा इसका यूज। तो क्या करना होगा, तो अब मैं इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मैं 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर दूं और डबल कर दूं। मेक सेंस? यस 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर दो, डबल कर दो किस चीज को, Vx f ऑफ Vx dVx, इसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर देंगे तो ये जो सामने Vx लिखा है ये कुछ टाइम हाफ द टाइम नेगेटिव वैल्यू लेगा, हाफ द टाइम पॉजिटिव वैल्यू लेगा, तो बेसिकली एरिया अंडर द कर्व 0 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली 0 नहीं है, इट्स अ नॉन जीरो वैल्यू। ये मैं बता देता हूँ वैल्यू आती है, ये वैल्यू आएगी 2kBt/πm। फाइन, दिस इज द एवरेज ऑफ द मॉड ऑफ Vx। और अगर मैं Vx का स्क्वायर का एवरेज निकालना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली मेरे को अब क्या करना होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करने में। ये तुम लोग मुझे बता सकते हो, चलो मैं लिख देता हूँ, फिर आगे देखोगे तुम लोग ये कहाँ फिट होता है। ये आ जाएगा ये, ठीक है। ऑब्वियसली बिना रूट के आएगा क्योंकि स्क्वायर हो चुका है v का। सर सेकंड वाला हम कर सकते हैं ना? सेकंड वाला में तुम जो है नहीं कर पाओगे। सेकंड वाले के लिए जो है प्रॉब्लम ये होगी कि बेसिकली x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल बनेगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर को t बोलूंगा तो हाँ सर हो कर जाएगा, सकते हैं मोस्टली। आराम से कर सकते हो, इजीली हो जाएगा। तुम बेसिकली Vx स्क्वायर को ही t बोल दो, इसमें Vx स्क्वायर आता है एक, ये वाले में। तो बेसिकली पूरा इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। सर फिर सिंपल सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। तो तुम एक्स स्क्वायर को t बोल दो तो x dx dt हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेट हो जाएगा, लिमिट्स डाल दे जाएंगे उसमें तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो डूएबल है, ठीक है। और ये वाला भी डूएबल है, इसमें भी कोई बिग डील नहीं है, ठीक है। तो अब इससे हायर पावर के भी हमें चाहिए होते हैं, लेकिन जनरली वो फिर एक कंपोनेंट के नहीं चाहिए होते हैं, पूरी स्पीड के चाहिए होते हैं। मैं आगे बताता हूँ कैसे उनका रिजल्ट क्या होता है और कहाँ उनकी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन फिर कंपोनेंट जो है Vx, Vy, Vz, उसमें जनरली यू डोंट नीड हायर देन स्क्वायर। आई मीन यू कैन कैलकुलेट इन प्रिंसिपल Vx क्यूब का भी एवरेज, Vx4 का भी एवरेज, Vx5 का भी एवरेज, ठीक है। तो ये है बेसिकली आइडिया। अब इसकी बात ये है, पॉइंट ये है अल्टीमेटली कि क्योंकि ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन जो है y और z में भी बनेगा, तो अगर ऐसा है तो व्हाट कैन बी डन इज दैट वी कैन देन से कि यहाँ लिख देता हूँ, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ही कर लेते हैं। ये भी एक तरीके से यू कुड से वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में देखा। तो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ये करना होगा कि मुझे एक तरीके से आई मीन बेसिकली तुम क्या कह रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें v स्पीड चाहिए। अब तो v स्पीड जो तुम्हारा है वो एसेंशियली Vx, Vy और Vz से बनता है, तीनों का अपना अपना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मेरे पास है। सो सिंस यू आर आफ्टर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैविंग अ स्पीड v, अब ऑब्वियसली मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, हैविंग अ स्पीड v बेसिकली शॉर्ट हैंड फॉर हैविंग अ स्पीड बिटवीन v एंड v plus d, बट लेट मी जस्ट से हैविंग अ स्पीड v। तो प्रोबेबिलिटी फॉर हैविंग अ स्पीड v इज essentially
that you have some speed vx in x, some speed vy in y and z. So those three probabilities, but also the fact that they are independent. I mean, what speed you have in x has no relevance to what speed you have in y or in z. So since these three directions are independent from each other, basically the probability distributions of x, y and z can be multiplied together to give you the total probability, right? तुम्हें पता होगा probability, तुम लोगों ने शायद पढ़ लिया है मैथ में. So if you have a set of independent events, then the probability of your event, which is basically a compound event in a sense of made up of all those independent events, but if they are independent, then you can multiply the probability. So one could say that the distribution for speed will be proportional to the product of the distributions. Which is to say it will be proportional to, अब देखो तुम कि इधर जो है सब एक्सपोनेंशियल, सब बोल्ट्जमैन फैक्टर लिखे हुए हैं और सब में ऊपर vx square, vy square, vz square लिखा हुआ है. Ultimately it will turn out to be proportional to minus m, क्योंकि एक्सपोनेंशियल्स में ऐड अप हो जाएगा वो. बट ये चीजें जो है सब मिला के स्पीड ये हो गया, और फिर इनको नॉर्मलाइज कर लेंगे ऑब्वियसली बाद में प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए, और साथ में इनके वो भी मल्टीप्लाइड है, आगे आगे इनके अपने मल्टीप्लाइड है सारी चीजें. मतलब ये तो ये हो गया जब मैं बोलूंगा एफ वी डी वी, तो मैं कह सकता हूं कि वो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू e to the power minus mv square by 2 kbt और dvx, dvy, dvz. ठीक है. अब ये जो dvx, dvy, dvz है, इसका इंटरप्रिटेशन हम ये कर सकते हैं कि ये एक इनफाइनेटेसिमल वॉल्यूम है. जैसे dx इंटू dy इंटू dz को तुम dv लिख सकते हो. अब वो वाला भी अलग है, वो कैपिटल भी है, वहां पर वॉल्यूम लिख सकते हो dv. जैसे अगर लेट्स से तुम मान लो एक स्फीयर पे इंटीग्रेशन कर रहे हो, राइट? कुछ तुम्हें इंटीग्रेट करना है, एक स्फीयर दिया हुआ है और स्फीयर की डेंसिटी जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है. तो अगर वो ट्रूली फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, यानी कि वो हर जगह वेरिएबल है, तो ऑब्वियसली बड़ा गंदा सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकली तुम्हें 3 डायमेंशनल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. तुम जो है पहले एक्स में इंटीग्रेट करोगे, फिर वाई में इंटीग्रेट करोगे, फिर जेड में इंटीग्रेट करोगे. तो उस इंटीग्रेशन में जो है ट्रिपल इंटीग्रल टाइप बनेगा. मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम मान लो स्फीयर का मास निकालना है, ठीक है, अब स्फीयर का मास निकालना है, लेकिन स्फीयर की डेंसिटी जो है वो एक्स वाई जी तीनों का फंक्शन है. So essentially what you're doing is you are basically multiplying it to infinitesimal dx, infinitesimal dy, infinitesimal dz, and then doing integration over all 3 dimensions. That will give you the mass of the sphere. तो ऑब्वियसली ये 3 डायमेंशनल इंटीग्रल होता है. लेकिन अगर मान लो स्फीयर में जो डेंसिटी फंक्शन है वो रेडियल सिमेट्री है उसमें, ठीक है, तो अगर उसमें रेडियल सिमेट्री है तो हम उसका फायदा उठा पाते हैं. अब हमें ऐसा ब्लाइंडली मशीन की तरह इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है कि पूरा डब्बे डब्बे बना के एक्स में इंटीग्रेट, वाई में इंटीग्रेट, जेड में इंटीग्रेट. अगर उसमें रेडियल सिमेट्री है, यानी उसकी डेंसिटी केवल आर का फंक्शन है, तो ये जो dx, dy, dz है, जो कि एक इनफाइनेटेसिमल वॉल्यूम है, ये सिंपली 4 पाई आर स्क्वायर डी आर से रिप्लेस किया जा सकता है. तुम लोग समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? यस. क्योंकि उस पूरे वॉल्यूम में ही डेंसिटी एक ही वैल्यू है, तो वो पूरे कोलीज होके एक बड़ा इनफाइनेटेसिमल वॉल्यूम बन गया. लाइक इंस्टेड ऑफ बीइंग ब्रोकन अप इनटू वेरी स्मॉल पिक्सेल्स, 3 डायमेंशनल पिक्सेल्स व्हिच ऑल हैड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डेंसिटी, इफ यू न्यू बिफोरहैंड कि डेंसिटी जो है केवल रेडियल फंक्शन है, एक्स वाई जी का फंक्शन तो है, बट ऐसा फंक्शन है कि for a certain if you are at a certain x y z such that the value of x square plus y square plus z square is the same, even though x, y and z might be different, then you have radial symmetry. And if that's the case, then you can basically
make your work much simpler by not having to integrate over every x and y and z, but instead coalesce all of the dx, dy, dz boxes which all have the same density into one large infinitesimal, which is the shell, जैसे हम करते हैं, क्योंकि यूजुअली हम जो इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं वो एक रेडियल सिमेट्रिक सिचुएशन होती है इनवेरिएबली. होमोजेनस है तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और अगर होमोजेनस नहीं भी है लेकिन फंक्शन है केवल रेडियल डिस्टेंस का, तो भी 4πr² dr. तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्पेस में, ये तो स्पेस में कॉन्सेप्ट है, इसको मैं वेलोसिटी स्पेस में भी लगा सकता हूँ. लाइक इफ आई इमेजिन दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग स्पेस इट इज अ स्पेस ऑफ वेलोसिटीज, क्योंकि स्पेस तो किसी भी चीज का हो सकता है, राइट? मतलब इन एन एब्स्ट्रैक्ट सेंस अ स्पेस कैन बी ऑफ एनी प्रॉपर्टीज, एंड फंडामेंटली अ स्पेस कैन बी ऑफ एनी डायमेंशंस आल्सो. 3 डायमेंशंस तो फिजिकल रियलिटी का प्रॉब्लम है, कि अगर तुम लिटरल फिजिकल स्पेस की बात कर रहे हो तो उसमें 3 डायमेंशन और वो एक्स वाई जेड पे डाले जा सकते हैं. लेकिन अगर तुम किसी एक एब्स्ट्रैक्ट स्पेस की बात कर रहे हो तो उसके कितने भी डायमेंशन हो सकते हैं, और वो एक स्पेस ही है और उसकी अपनी ज्योमेट्री भी होती होगी, उसमें कोई पाइथागोरस थ्योरम भी होता होगा. आई मीन जो एक तरीके से जो ज्योमेट्री होती है, जो हायर ज्योमेट्री होती है ओवर एब्स्ट्रैक्ट स्पेसेस, वो यही होती है कि आई मीन मैथमेटिक्स इज द जनरलाइजेशन ऑफ दोज आइडियाज इवन इफ दे आर नॉट रेलेवेंट डायरेक्टली टू आवर एक्सपीरियंस. If you want to say, okay, what if space was not physical space? What if I'm dealing with a space of, let's say, 11 dimensions or 34 dimensions? Why would you be dealing with those things? Because let's say you're solving a problem which is a problem about some kind of data that you're handling, in which every thing has 34 attributes. Like a point in space has 3 attributes, x, y, and z, 3 locations, 3 positions. Similarly, you could be dealing with some data in which every point has 34 attributes. Let's say each point in that space is a person, and you have data on 34 of their properties, their age, their height, their whatever, right? And so you create a 34 dimensional space. Obviously you can't draw it or imagine it, but it is there, and every point in that space is a person whose position is given by a kind of a tuple of 34 values, right? Like this. And obviously there would be some meaning to distance also there, and there would be some formula to how to build closest distance or whatever. There would be a geometry that is native to that space also. Might be different from our particular Euclidean geometry, but it would be a geometry. तो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज का एक स्पेस तो इमेजिन किया जा सकता है. तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जो अगर हम बोलें कि क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी dvx dvy dvz बन गया है ना, इंस्टेड ऑफ dx dy dz I have a dvx dvy dz. So I'm imagining a velocity space in which one axis represents vx, one of them represents vy, and one of them represents vz. ठीक है. And a point in this space is not a point in actual physical space. A point in this space is a velocity, is a particular velocity. Like if you go to a certain coordinate in this space, there will be some value of vx, vy, vz. So that represents a particular velocity. Correct. अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे dx, dvx, dvy, dvz बन गया है, तो in the same spirit, जैसे मैंने तुम्हें स्फीयर के ऊपर इंटीग्रल बताया, और क्योंकि मैं ऑलरेडी जो मेरा फंक्शन है वो केवल v से रिलेटेड है, vx, vy, vz से रिलेटेड नहीं है इंडिविजुअली. लाइक यू कुड इमेजिन ये वो डेंसिटी फंक्शन टाइप है जो मैं अभी पीछे स्फीयर के ऊपर बता रहा था. बट नाउ सिंस आई सी दैट इट ओनली रिलेट्स टू v एंड नॉट इंडिविजुअली द vx, vy, vz, meaning to say that I could coalesce basically every vx, vy, vz which basically contributes to the same v, or in a sense I could collect all of the points from this space such that they have the same value of vx square plus vy square plus vz square and call it b. तुम लोग समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर. ठीक है. तो तुम बेसिकली क्या कह रहे हो कि तुम इस स्पेस में एक ऐसा वो बना दोगे, एक स्फीयर इमेजिन कर लो जो सेंटर्ड एट ओरिजिन है, और ये जो स्फीयर है इस पे एसेंशियली द आइडिया बीइंग दैट यू आर this is of some radius v, some radius v, and some thickness also dv naturally. टीचर सॉल्व करेगा ऐसे करके.
तो ये dv हो गया बेसिकली, ये जो है ये dv हो गया. So basically all the points which give me the same speed are in this shell. You understand? They might be different velocities. One of them could be 2 in x and 3 in y and 7 in z. Some other could be minus 11 in x and something else in y and something else in z. But they all have this in common, that the square of the sums, matlab vx square plus vy square plus vz square gives the same number. Correct? And if that's the case, they are all being called v. तो बेसिकली जो पीछे हमने dvx, dvy, dvz लिखा है, can be pretty much written as 4 pi v square dv. This is a volume of a thin spherical shell in the velocity space. Make sense? Yes. तो बस अब इसको फिट कर देंगे पीछे, तो हमारे पास आ जाएगा कि fv is therefore proportional to 4 pi v square times the Boltzmann factor dv. I mean fv dv है, ये याद रखें, खुद fv dv है. और फिर नॉर्मलाइज कर लेंगे इसको. तो जब तुम इसको नॉर्मलाइज कर दोगे तो बेसिकली तुम्हारे पास आ जाएगा fv dv is exactly equal to, अब तुम्हें पता ही यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है 4 by root pi, राइट, फिर m by 2 pi kbt 3 by 2, 4 by root pi होता है शायद, है ना. फिर अंदर पाई नहीं होगा अगर बाहर पाई ले रहे हो, और v स्क्वायर e की पावर माइनस mv स्क्वायर बाय 2 kbt dv. सही है. जो भी आएगा यहाँ पर 4 पाई 4 बाय रूट पाई. सर 4 पाई आता है. 4 पाई पाई जो है फिर अंदर नहीं आएगा ना, क्योंकि फिर तो 4 हो जाएगा पावर, तो रूट 3 पावर ही होती है उसकी, अंदर नहीं आएगा फिर 4 पाई m by 2 पाई 2 kbt होगा, फिर बस ये हो जाएगा 3 by 2 पावर इसकी, 4 बाय रूट पाई बाहर. ठीक है, ये बस इसको बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन. अब ये स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है. आई मीन एसेंशियली बाकी सब कांस्टेंट कांस्टेंट जाने तो मेनली द फैक्ट इज दैट इट इज अ फंक्शन ऑफ दिस सॉर्ट, v स्क्वायर e की पावर माइनस mv स्क्वायर बाय 2 kbt, ये सब भी कांस्टेंट्स. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, राइट. और ये बेसिकली इज द प्रोबेबिलिटी, द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस थिंग fvdv itself. इसकी मीनिंग क्या है इस चीज की? दिस इज द प्रोबेबिलिटी, पूरे fvdv की बात कर रहा हूँ. That if you pick a particle at random from this collection, then the probability that it has a speed between v and v plus dv is given by this whole thing. Obviously, it's an infinitesimal number because the interval that you've chosen is also infinitesimal. ये भी तो dv लिखा हुआ है यहाँ पर, तो एक infinitesimal probability ही है, क्योंकि एक कलेक्शन में से एक पार्टिकल की इतनी नैरो रेंज में, इनकी इनफाइनेटेसिमल रेंज में स्पीड होने की लाइकलीहुड भी इनफाइनेटेसिमली स्मॉल ही. ठीक है, तो अब बाकी इसका तो तुम लोगों को पता ही है स्टोरी क्या होती है, कि कैसे इसको इंटरप्रेट करते हैं, ग्राफ क्या होता है वगैरह वगैरह. और टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर भी इसमें शो अप करता है 2 जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे.
So what effect temperature has on this distribution, how it shifts based on, I mean, you can think of the temperature as being a parameter and the mass of the gas m particle, each particle as a parameter, and you could increase or decrease those to see how the distribution function would vary. Roughly speaking, ये ऐसा दिखता है कि इस टाइप का हुआ है, लॉन्ग टेल्ड फंक्शन होता है, और टेम्परेचर अगर तुम बढ़ा दोगे तो बेसिकली ये जो है और राइट की तरफ चला जाएगा, हायर स्पीड्स पे चला जाएगा। ये एफ वी का प्लॉट है, लेकिन एफ वी डी वी का प्लॉट नहीं है। एफ वी का प्लॉट है क्योंकि एफ वी ही फंक्शन है उसमें से। डीवी के साथ तो फिर इंटरप्रिटेशन है कि जब डीवी आ जाएगा तो डीवी जो है यहाँ पे एक इंटरवल होगा, और उस इंटरवल में जो स्ट्रिप आएगा उसका एरिया एफ वी डी वी होगा, क्योंकि इंटरवल का विड्थ डीवी है ऑन द वी एक्सिस। सो देन दिस एरिया is also this thing, which is what FVDV is, but the plot is of FV only, which is the function. Okay, makes sense. And if you increase the temperature, it goes more to the right, but also comes down a little bit because the area under the whole curve has to be equal to 1 naturally. तो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो obviously speeds बढ़ जाते हैं सबके, but distribution overall थोड़ा नीचे आ जाता है. This is at some higher temperature. ठीक है. तो आई होप तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा. अब लेट्स अब क्या होता है एक्चुअली, बिफोर वी डू अ प्रॉब्लम, लेट मी सी. हम जो है इसमें ये तो कर ही सकते हैं एक दो बेसिक प्रॉब्लम्स. हाँ ठीक है, चलो पहले एक आध प्रॉब्लम कर लेते हैं इसी पे बेस्ड. पहला प्रॉब्लम तो चलो ये है कि मान लो मैं टी पे डिपेंडेंस इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ इन अ वेरी सिंपलिस्टिक मैनर. आई वुड लाइक टू फाइंड द टेम्परेचर at which the probability of having a certain speed v is something I know, right? So I am like 5 meter per second speed. अगर मेरे को मतलब मेरे पास कलेक्शन है और वो मेरे कंट्रोल में है और टेम्परेचर में उसका नॉब से बड़ा कम सकता हूँ, तो अगर मैं एक पर्टिकुलर स्पीड में इंटरेस्टेड हूँ कि मैं नॉब को, टेम्परेचर का नॉब को चेंज करके मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से चेंज हो कि एक पर्टिकुलर स्पीड विच आई वांट 5 मीटर पर सेकंड becomes the most probable speed, or in the sense of it is the most, I mean most people have that speed, or the probability of having that speed is the largest. Like then if I thrust my hand into the container, then I'm most likely to pick a particle having this particular speed. तो वो क्या टेम्परेचर होगा? सर एक लाइक रैंडम टेम्परेचर भी है. हाँ मतलब बेसिकली बस रैंडम स्पीड भी है. रैंडम स्पीड भी है कोई. v is a constant for this problem in the sense that I would like to maximize the probability of having this speed v. So then at what temperature will that occur? Obviously it will come out to be related to v itself in terms of v.
करेक्ट है सिद्धांत. Rn करेक्ट है. Rn डिनोमिनेटर में नंबर गलत है.
अमोघ उल्टा लिखा है तुम्हारा आंसर, और दूसरा ये है कि m स्क्वायर b4 नहीं आएगा, mv स्क्वायर आएगा। बेसिकली मैक्सिमा फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, राइट? दैट्स इट। तो यू हैव टू मैक्सिमाइज fv but with respect to temperature, that's all. Meaning to say that d of fv by d of t is 0. कर लो इसको, आंसर आ जाएगा इसका mv square, I mean the t at which you get the maximum probability of having v speed is mv square by 3 kb. ठीक है, right? Okay, then moving on to this fact कि vx का स्क्वायर का जो एवरेज आया था वो ये आया था, राइट? अब अगर मैं v का स्क्वायर का एवरेज निकालूं, चलो पहले v का एवरेज और ये देख लेते हैं कि जैसे हमने vx के रिजल्ट्स निकाले, एवरेज स्पीड अगर मुझे फाइंड करनी है, क्योंकि fv तो आ ही गया पूरा का पूरा, तो अगर मान लो मेरे को v एवरेज फाइंड करना है, तो दैट वुड मीन आई नीड टू डू 0 से इंफिनिटी। ऑब्वियसली 0 से इंफिनिटी है, स्पीड है ये, it is not a velocity, it's not a signed quantity anymore, it is basically just speed, and so I need to just integrate it from 0 to infinity. तो निकाल सकते हैं वो, तुम लोगों को रिजल्ट पता है, तो हम काइनेटिक थ्योरी में पढ़ते हैं। करने के लिए मेरे को क्या करना है, FPDV करना है, एवरेज निकालने के लिए v से FPDV कर देंगे, एवरेज स्पीड आ जाएगी, ये आती है 8 kbt by pi m रूट। v का स्क्वायर फाइंड कर सकते हो तुम का एवरेज, यानी v स्क्वायर FPDV, राइट? ये इंटीग्रल ऐसा है जो तुम नहीं कर सकते हो, मतलब इसका रिजल्ट तुम्हें देखना पड़ेगा या बताना पड़ेगा। अभी हम प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें बता दूंगा क्या होता है। ये आ जाएगा, तुम्हें पता है इसका रिजल्ट 3 kbt by m आता है। If you look at this result, you can see that it is also, by the way, this, which it should be, क्योंकि each of vx square का average is kbt by m and v square is vx square plus vy square plus vz square, तो v का square का average is the sum of the averages of the squares of vx, vy, vz, each of them being kbt by m each. इसको रूट ले लेते हैं तो VRMS बोल देते हैं, रूट लेते हैं ताकि डायमेंशन फिर से स्पीड का हो जाए, स्पीड का स्क्वायर का एवरेज का रूट ले रहे हैं हम। करेक्ट। और एक रिजल्ट वो होता है मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, कौन सी स्पीड की मोस्ट लाइक्लीहुड है, तो उसके लिए तुम यही ऑपरेशन कर रहे हो बट विद रिस्पेक्ट टू v itself instead of temperature, right? That's called most probable speed. This is also something you guys can do. इसका भी रिजल्ट तुमको पता है।
बट अगेन जो हम कर रहे हैं वो ये चीजें रेलिवेंट ज्यादा है उसमें कि बी का एवरेज क्या है और बी का स्क्वायर का एवरेज क्या है। बी का स्क्वायर का एवरेज इसलिए रेलिवेंट होता है क्योंकि इससे हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी मिलती है। अब अगर मुझे इन पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी चाहिए जो कि एक फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी है, बिकॉज वी विल सी you already know that it relates to temperature, which is a macroscopic measurable property. तो जो कि इसी से आता है, इसी को अगर फॉलो थ्रू करेंगे आगे तो गैस लॉ बन जाएगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे निकालना है तो मुझे बेसिकली हाफ एम बी का स्क्वायर का एवरेज चाहिए। बट वी का स्क्वायर का एवरेज तो हमें पता ही है, 3 kBT/m आ चुका है वो। तो इसका मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस पूरे मॉडल में जिसमें पॉइंट मासेस लिए हैं, हर एक का मास m है, इस 3/2 kBT। क्योंकि इसको तुम इंडिविजुअली सोच सकते हो एज 1/2 kBT कमिंग फ्रॉम ईच ऑफ Vx स्क्वायर, Vy स्क्वायर, Vz स्क्वायर, बिकॉज एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैन आल्सो बी रिटन एज हाफ m the sum of Vx square average plus Vy square average plus Vz square average. So each of them gets kBT/m. So from each of those directions, you are getting a half kBT each worth of energy on average, right? Yes, sir. एक ये प्रॉब्लम ट्राई करो। मान लो मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें कोई पार्टिकल हो सकता है और उसकी जो ये डायरेक्शन में स्पीड है उसको हम बोलेंगे VA along the axis, एक्सियल स्पीड। और जो उसके परपेंडिकुलर है किसी भी तरफ हो, बस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, उसको बोलेंगे रेडियल स्पीड, जो सिलेंडर के रेडियस के साइड में, ठीक है, VR। तो कैन यू फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ I mean ये एक पार्टिकल मैंने बनाया, obviously there is a large collection of particles because तभी कुछ मीनिंग है RMS का, क्योंकि उसमें averages involved है, so it's and just drawing a single particle but basically means there is a collection which have different VAs and VRs। क्या होंगी तो वैल्यूज बता दो।
पर वी आर और ये क्या है क्या? वी जो है एक्सिस, एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है उसको वी बोल रहे हैं, ओके। और एक्सिस के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है उसको वी बोल रहे हैं। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन मान लो। हाँ हाँ, मैक्सवेलियन ही है। नहीं अमोघ, आर यू श्योर दैट्स वी ए? ऑब्वियसली ये तो है ही कि पार्टिकल का मास m है, वो सब तो है ही, डायमेंशंस तो वही आएंगे, पार्टिकल का मास m है, टेम्परेचर T है ऑफ द गैस। By the way, when historically this was found or people came to this point, that gave these other interpretation of temperature. So if you look at this equation, that average kinetic energy is equal to 3 by 2 kBt, and keep in mind this T has come from that whole idea of starting from the point where we didn't know what temperature was. We just simply said, okay, it's a parameter that when you leave two systems long enough together, they achieve an equilibrium, and the property that equalizes is given the name temperature. It is that property. So it already has a statistical interpretation. But then when you do this whole business of, okay, what is the probability of having this and this speed, and ultimately average kinetic energy, and then you find that it turns out to be proportional to that property called temperature. So now you have a more mechanical, a more mechanistic or a kinetic explanation for temperature, which is that it is basically a measure of the average kinetic energy, how fast things are moving around, which is the one we normally talk about when we talk of temperature, right? यशनील, तुम्हारा आंसर डबल होना चाहिए दोनों, तो करेक्ट हो जाएगा। ओके आई थिंक तुमने मुझे बता दिया है ये RMS, I mean you're telling me the kinetic energy value, something like that, right? Dimension. ठीक है, तो हो जाएगा ना, इसको इक्वेट कर दो। अगर तुम कह रहे हो कि ये पहला वाला is the kinetic energy in the axial direction, then if you equate it to half mv axial square average, then you will get v axial square average, and उसका रूट लेने से v axial RMS आ जाएगा। Similarly for the second one, तो करेक्ट है, आंसर तो करेक्ट है। अब हो गया, किसका आंसर है, v या vr? नहीं, दोनों सेम नहीं होंगे। सिद्धांत करेक्ट आंसर है।
सिद्धांत दूसरा भी करेक्ट है। हाँ वो करेक्ट है, यशनील करेक्ट आंसर है दोनों। हाँ वो करेक्ट है दूसरा भी। ठीक है तो देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बेसिकली क्या हो रहा है कि what is being done in a sense is that the differentiation between x, y and z is being kind of smudged in the sense that कि एक डायरेक्शन को तो ये बोल दिया है, लेकिन उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो स्पेसिफिकली दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन होने चाहिए। लाइक इफ यू लिटरली कॉल इट, इफ यू से कि भाई एक्स वाई जेड ही ऐसा है कि एक्स ऐसे होता, जो एक्सेस के अलॉन्ग होता वो एक्स बोल दो, तो एक ऐसे परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन होती और एक ऐसे परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन होती। व्हाट इज बीइंग डन इन दिस प्रॉब्लम इज दैट देयर इज नो डिफरेंशिएटिंग बिटवीन वाई एंड जेड। Any velocity in the yz plane is being called a radial velocity. हाँ मोग करेक्ट, cylindrical coordinates here. So the idea is that you are basically not differentiating between the individual components in y and z. You are just simply saying any speed in yz plane will be called vr, and the speed in the x direction will be called va. So naturally अब va जो है उसको kbt by m एनर्जी मिलेगी, तो उसका आरएमएस जो है हाफ एम वी ए स्क्वायर, राइट, ये kbt by m हो जाएगा। और हाफ, तो इससे तुम्हारे पास ये आ जाएगा आरएमएस ऑफ दिस वैल्यू, which is va
square root इनका will be 2 kBT by m. सही है? And half m VR square is half m, which I can then write as this. Sorry. Correct. But each of them is themselves a kBT by m each. नहीं, मैंने यहाँ पे m एक्स्ट्रा लिख दिया ना, अभी ठीक है? नहीं, यहाँ पे भी हाफ भी गलत हो गया ना, हाफ के साथ I forgot a half here. This is just kBT, correct? And this is a half kBT for this and a half kBT for this, correct? So that's a kBT. So therefore VR का square का average is 2 kBT by m. करूँ? ठीक है, फाइन? Yes sir. All right. अच्छा, तो अब जो है हम लोग एक काम करते हैं, लेट अस डू दिस प्रॉब्लम फर्स्ट. एक ओलंपियाड का प्रॉब्लम है पुराना, जो कि इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, सिंपल ही है. अच्छा नहीं, आई नीड टू टेल यू अ बिट ऑफ दिस बिफोर दैट. लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू वन थिंग, अदर थिंग. मैं ये क्विकली कर देता हूँ, हम लोग ये करने वाले नहीं है मतलब, लेकिन तुम लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो यू कैन लुक इट अप ऑनलाइन, तो मिल जाएगा, किसी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, ब्लंडल में मिल जाएगा, और भी थर्मोडायनामिक्स के जो भी बेसिक जिनमें काइनेटिक थ्योरी होता है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होता है, वो eventually the point is that once you arrive at this point, once you get to this point here, then from this point onwards you can actually calculate. I mean, I'm just giving you a broad overview of what this distribution is capable of giving us, what all can be calculated. Since you have a distribution that tells you, what does it tell you? It tells you how many particles, I mean technically the probability, but basically the number of particles. If you know the total number of particles, then if you multiply this probability to that number, you will basically get the number of particles having a certain speed. So that's the information that you have. ठीक है, और तुम्हारे पास इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन भी है x, y और z में कितनी कितनी स्पीड्स हैं. तो अब तुम उससे कई सारी चीजें कर सकते हो. द मोस्ट फेमस बीइंग कैलकुलेटिंग द प्रेशर, because if you, with a few more assumptions, so for example you said okay, I know how fast, how many people are moving, right? That's the information that FEDB gives me, how many are moving, how fast. If I consider a wall of a container, right, there is a container in which there is a gas and the particles are pounding the walls of the container, and so with a few assumptions, one being that all collisions are elastic, in the sense that every particle that hits the wall basically rebounds with the same speed at the same angle, which is obviously only true in a very kind of a statistical way. Because if, let's say, you put a gas in a container and the container is already hotter than the gas, right? So in general, what will happen is that in any collision that the particle has with the walls of the container, it is actually going to pick up energy. It is going to rebound with a different speed. And if you look at it even more closely, then the interaction at a very fundamental level is kind of quantum mechanical. And so there should also be like some other kind of a function which tells you
at what angle it rebounds. I mean, saying that it just hits the wall and comes back at the same speed and the same angle is a very crude or a very grainy picture at a very macro scale. I mean, I'm not saying it's a macro scale picture in the sense of pressure and temperature, which are way macro than any of this stuff. But this stuff is also quite macro compared to what is actually happening when the particle makes contact with a particular particle on the wall, right? Because the more you zoom into it, the more sort of closer you get to quantum mechanics. So obviously it is like a kind of an approximation to say कि भाई हाँ elastic collision हो रहा है. मतलब वो एक reasonable approximation हो सकता है under a set of assumptions कि हम कह रहे हैं कि let's say the particle and the gas and the container are in thermal equilibrium, so they have the same temperature, right? So the gas particles are not going to pick up energy from the container particles, nor are the container particles going to pick up energy from the gas particles. But again, keeping in mind that this is also only true at an average level, because when you talk of temperature, you are already at the highest possible level. You are at a macro scale, and so every particle is not moving at the same speed. Even if on average the gas has the same temperature as on average the particles of the container, that's not the case in any particular interaction of a gas particle with a container particle. Either of them could have more or less energy than the other, right? So naturally it's not really accurate, but nevertheless अगर हम ये मान लें कि ऐसा है और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है वहां पे, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जब पार्टिकल उसको हिट करके वापस आएगा, तो वही जो अपना क्लासिकल मैकेनिकल मॉडल होता है कि अगर मैं वॉल को ठोका v स्पीड से थीटा एंगल पे, तो मेरा मोमेंटम mv cos थीटा से चेंज हो गया, तो वॉल को जो एक इंपल्सिव हिट लगा वो mv cos थीटा का लगा. मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक पैच ऑन द वॉल है ऑफ सम एरिया ए, या यूनिट एरिया ही ले लो क्योंकि लिटरली वी आर कैलकुलेटिंग प्रेशर. सो इफ आई एम एबल टू कैलकुलेट द force that this patch experiences, that will automatically be the pressure. And the way I'm calculating the force is by using the idea of how much momentum change occurs on this unit area every second, right? So essentially what you're saying is that this is the normal, and to this thing, and some particle arrives at some angle from somewhere, hits it and rebounds at the same angle and goes away, right? Something like this. So if it came with v speed at theta angle, then it goes away with v speed at theta angle, this one particular particle, right? And then therefore what that means is that कि इसका जो अपना change of momentum हो गया होगा, वो अगर इस particle का mass m है तो mv cos थीटा होगा. अब वो इस एक का होगा, करेक्ट? तो अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूं कि ये तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गया है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से ये इंफॉर्मेशन आ गया है कि अगर हर यूनिट वॉल्यूम में n पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अगर हर यूनिट वॉल्यूम में n पार्टिकल्स हैं, स्मॉल n, राइट? सो लेट्स से इफ a unit volume has n particles, then the distribution, Maxwellian distribution, tells me that then n times fv dv particles have speed v. Does this make sense? Yes, sir. क्योंकि fv dv is the probability of having the speed v, which is to say the number of particles having the speed v over the total number of particles. So if in a unit volume there are n particles, then the actual absolute number of particles that have the speed v in a unit volume is the number density n. I mean the number of particles per unit volume multiplied to the distribution function. But the trouble is I don't know how many of them are coming at theta angle, because obviously that has a role to play in how hard they hit the wall, right? Those that hit it normally hit it the hardest because all of their momentum is completely reversed by the wall, and there would be glancing collisions also with theta approaching 90 degrees, so they hardly hit the wall or basically graze the wall or something. So there's like a large variation in how hard the hits are, even if I have found everybody who has one particular speed, like in this hailstorm of particles that are hitting this unit area every second,
they are basically coming at all possible speeds at all possible angles. तो मेरा जो मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसके ऊपर एक फिल्टर है. तुम इसको फिल्टर के सेंस में सोचो, जैसे हम लोग फिल्टर करते हैं ना रिजल्ट्स को Amazon पे या कहीं पे, like you get everything and then you put some filter like price between this and this, so then it filters everything that has those properties, right? And then you put an additional filter, so then you get everybody that has that property and that property. So similarly इसके ऊपर जो पाउंडिंग हो रही है इस यूनिट एरिया के ऊपर, वो हर स्पीड और हर एंगल पे हो रही है. तो FVDV का फिल्टर लगाने से मेरे को स्पीड वाला सैंपल मिल गया कि वो सारे मिल गए जो 5 मीटर पर सेकंड से इसको ठोक रहे हैं. बाकी सारे जो 6 से और 10 से और 3 से और वो सब गायब हो गए, इरेज हो गए, अभी फिलहाल के लिए इनविजिबल हो गए. आई एम ओनली एबल टू सी राइट नाउ everybody that hits this unit area at one unique speed, let's say 5 meter per second. But the trouble is they are all hitting at different angles also, and which means they are all hitting it differently in terms of how hard they hit it. So obviously I need to do another filtering on the whole thing, which is in terms of angle. I need to basically get to a point where I know how many are coming at a particular speed at a particular angle, because once I have that number, I will multiply this to it, because everybody who comes at a particular speed and at a particular angle will have this much of a hit on the wall. So I will then be able to multiply this mv cos theta to that particular number, the number of particles at speed v at angle theta, and then I will multiply this number to that, so I will get the momentum hit per second. अब per second वाला चीज भी निकालना पड़ेगा वो, लेकिन फिलहाल momentum hit generated by everybody at speed v at angle theta, and then a double integral over v and theta basically across all possible speeds and all possible angles should give me the total momentum hit that this unit area takes per second, which is basically the force, but since it's a unit area, that's automatically the pressure. So eventually that is the path that you take if you want to derive the ideal gas equation. Correct? समझ गए तुम लोग? Yes sir. Yes sir. Right? तो वो हम नहीं कर रहे हैं, मैं वो skip कर रहा हूँ, इतना relevant नहीं है हमारे लिए. But basically all you need at this point is just a consideration of how many particles come at a particular angle theta, which is also, if you think about it, fairly simple, because if you are assuming that any particle in this container is equally likely to be headed in any direction, like there is no directional preference, and I mean that's a reasonable assumption, then the probability that a particle is headed at a particular angle theta is not difficult to calculate. If you say, okay, this is some direction, let's say take a direction, I mean independent of this discussion, I'm separately doing something, I'm saying let's take some fixed direction and then say if a particle started from this point and it was equally likely to head in any direction, then the probability that it was headed at a particular angle theta relative to this direction which I initially picked, right? Theta किसी दूसरे direction के relative ही होगा, absolute space में तो क्या theta होगा, तो इससे theta पे जाने की probability क्या होगी? तो अगेन द इशू इज द सेम जो स्पीड्स के साथ होता है, किसी एक यूनिक स्पीड पे होने की प्रोबेबिलिटी तो जीरो होती है, बिकॉज यूनिक स्पीड तो एक अल्ट्रा प्रिसाइज रियल नंबर है और लिटरली उस पे कोई पार्टिकल नहीं होगा. तो सिमिलरली थीटा भी एक रियल वैल्यूड वेरिएबल है, तो एक एब्सोल्यूट थीटा लाइक 37 पॉइंट व्हाटएवर इतना पे तो कोई पार्टिकल नहीं होगा. तो इसमें भी वही करना पड़ेगा कि थीटा और थीटा प्लस डी थीटा के बीच में जाने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी जा सकती है. कि तुम बोलो what is the probability that some particular particle is headed between theta and theta plus d theta. If it is equally likely to be headed in any direction, then what's the likelihood of being headed in this particular this thing? And then you can see that that's basically, if you consider like a sphere here centered at this point जहाँ पे वो start में था, then the probability that you are headed between theta and d theta is basically the same as this area of this ring divided by the total area of this sphere. Do you guys understand what I'm saying? Yes sir. है ना? तुम एक यूनिट स्फीयर मान लो, कुछ भी स्फीयर मान लो, यूनिट से कोई मतलब नहीं है, आर रेडियस का स्फीयर मान लो. पॉइंट है कि इस पर्टिकुलर थीटा, क्योंकि ऑब्वियसली थीटा तो इस लाइन के रिलेटिव बहुत सारे डायरेक्शन में है. इट्स लाइक अ सरफेस ऑफ अ कोन. इट्स नॉट रियली अ कोन आल्सो, इट्स अ कोन एंड देन अ कोन. सो इट्स लाइक अ कोनिकल रीजन. उसके अंदर तुम कहीं भी हेडेड हो तो तुम कहा जाएगा कि तुम थीटा पे हेडेड हो.
relative to this specific direction, right? So obviously if you find this area can be easily found. This is how much is this? If I say this is r, इसका circumference हो जाएगा 2 pi r sin theta, और इसकी width हो जाएगी r d theta. ये तो इस स्ट्रिप का एरिया है, और पूरे स्फीयर का एरिया से डिवाइड कर दो इसको 4 pi r square. So basically the probability that you are headed at theta relative to this direction is just sin theta d theta by 2. Make sense? Yes, sir. That's the probability of being headed between theta and d theta. So you can then take this probability, multiply it to this probability, which is the probability of having speed between v and v plus dv. I mean, with n, it is not just the probability, it is literally the number of particles. So now n fv dv sin theta by 2 d theta, n fv dv and then sin theta d theta by 2 is the number of particles. It's the absolute number of particles per unit volume, obviously, that have the speeds v and are headed at an angle theta. Correct? Then you can multiply it to mv cos theta, because all of these impart this much of a momentum hit to the patch. बट अगेन एक चीज और इसमें करना पड़ेगा, वो ये है कि अब वो सारे पार्टिकल जो यूनिट वॉल्यूम में ये स्पीड और ये एंगल पर आ रहे हैं, वो एक यूनिट टाइम में तो इस पैच तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये वॉल्यूम तो इधर की तरफ होगा. तुम लोग समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? Yes. तो एक वॉल्यूमेट्रिक फैक्टर से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो थीटा पे लोकेटेड हो. ठीक है, तो अब मैं वो कर नहीं रहा हूँ, तुम लोग बेसिक आइडिया समझ गए हो, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं. बट अगर वो वॉल्यूमेट्रिक फैक्टर से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर एब्सोल्यूट नंबर आ जाएगा. बस एक चीज और मल्टीप्लाई करना है तो होल थिंग हो जाएगा द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ हिट्स, द लिटरल एब्सोल्यूट नंबर, नॉट इवन अ प्रोबेबिलिटी, नॉट पर यूनिट वॉल्यूम, जस्ट द लिटरल नंबर ऑफ हिट्स पर सेकेंड दैट दिस यूनिट पैच टेक्स एट स्पीड v एट एंगल थीटा. ठीक है, तो वो वॉल्यूमेट्रिक फैक्टर अगर तुम यहाँ डाल दोगे जो भी है, थीटा से रिलेटेड है वो ऑब्वियसली, और n से रिलेटेड है. आई मीन n तो एब्सोल्यूट नंबर है, उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थीटा से रिलेटेड है. और फिर इस पे जब तुम डबल इंटीग्रल लगा दोगे, ऑल पॉसिबल स्पीड्स, ऑल पॉसिबल एंगल्स, आई मीन ऑल पॉसिबल स्पीड्स तो होगा ही 0 से इंफिनिटी, ऑल पॉसिबल एंगल्स से मेरा मतलब है -π/2 to π/2. करेक्ट, क्योंकि उधर के एंगल वाले तो इधर से नहीं ठोकेंगे, वो तो उधर तो कोई है भी नहीं वैसे भी दूसरी साइड. तो -π/2 से π/2 एंड 0 से इंफिनिटी. और ये इंटीग्रल्स एक्चुअली ये कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल नहीं है, क्योंकि जो v के फंक्शन है वो केवल v के फंक्शन है, और जो थीटा के फंक्शन है वो केवल थीटा के फंक्शन है. सो इट्स नॉट रियली टेक्निकली अ डबल इंटीग्रल, इट्स जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल्स. थीटा का अलग इंटीग्रल होगा, v का अलग इंटीग्रल होगा, और वो आ जाएगा प्रेशर. और जब वो प्रेशर आ जाएगा तो यू विल बेसिकली फाइंड दैट इट विल कम आउट टू बी दिस वैल्यू. मतलब मैं शॉर्टकट मार लेता हूँ जस्ट टू गेट पास दिस पॉइंट, कि जब तुम ये कर लोगे कि तुमने कर लिया मान लो इंटीग्रेट, ये करने की जरूरत नहीं है, ये देखने की भी जरूरत नहीं है. तुम इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो, बट ये कोई ऐसी बहुत रेलिवेंट चीज नहीं है हमारे. जस्ट गिविंग यू एन आइडिया ऑफ व्हाट दिस लीड्स टू. इंटीग्रेटिंग ओवर ऑल v and theta gives you pressure. तो प्रेशर तुम्हारे पास आ जाएगा, ये वाला रिजल्ट तुमको पता ही है, ये आ जाएगा n है पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम 1/3 बेसिकली आ जाएगा VRMS आ जाएगा, मतलब स्क्वायर आ जाएगा उसका. 2 भी आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, राइट. मैं रिवर्स इंजीनियर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है क्या आना चाहिए. दैट्स इट. P = 2/3 n VRMS स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा. मतलब जो इंटीग्रल बनेगा v में, मतलब तुम कर लोगे थीटा बीटा का इंटीग्रल कर लोगे, वो तो कुछ नंबर आ जाएंगे, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा कुछ थीटा के साथ इंटीग्रेट होगा -π/2 से π/2, वो कुछ नंबर आ जाएगा. और जो v का इंटीग्रल है, क्योंकि उसमें देखो बेसिकली क्या हो रहा है, ऑलरेडी तुम देख रहे हो एक
FVdV है बराबर। यस फिर एक V ये रहा जो कि मोमेंटम से आ रहा है, और एक V इससे आएगा, क्योंकि कितने पार्टिकल आके इसको पर यूनिट टाइम ठोकेंगे वो भी V के प्रोपोर्शनल है। वो V के इसलिए प्रोपोर्शनल है क्योंकि ऑब्वियसली जितना V है उतना, मतलब जिसका V ज्यादा है वो पहुंचेगा उधर एक यूनिट टाइम में। लाइक द एरिया, इफ यू से, इट्स लाइक सेइंग इफ देयर इज अ वॉल and there are particles, a much simpler situation, there is a crowd of particles but they're all moving directly towards the wall at 5 meters per second, and I know their space density, there are like 40 particles per meter cube. Then how many of them are going to hit the wall in a unit time is related to this 5, because basically everybody in this volume which is 5 meter long and patch area wide is going to crash into the wall in 1 second. जो उससे 5 मीटर से भी दूर है वो तो नहीं पहुंच पाएगा 1 सेकंड में वहां तक। तो अब ये 5 को V कर लो तो ये V लंबा हो जाएगा, ये वॉल्यूम जिसमें सारे लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो एक प्रोपोर्शन, एक V आएगा इस वॉल्यूमेट्रिक फैक्टर से कि कितने उस वॉल्यूम के लोग हैं जो इसको इस तक पहुंच जाएंगे 1 सेकंड में और इसको ठोक देंगे। एक V वहां से आया, एक V मोमेंटम से आया, और एक हो गया, बस 2 V आ गए, V स्क्वायर बन गया। तो V स्क्वायर FVdV तो तुम्हें पता ही है, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ये रहा, यही बनता है वो V स्क्वायर का एवरेज बन जाता है वो, तो वो 3 kBt/m है, तो वो वहां डाल देते हैं हम लोग आके। दिस बेसिकली बिकम्स n 2/3 and 3/2 kBt बराबर। तो ये उड़ गया, ये उड़ गया, और ये n क्या है? n है नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, where capital N is the total number of particles in the container। तो बन गया आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया इसका यूज। अब हम जो चीज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो एक दूसरी क्वांटिटी है विच विल बी यूजफुल टू नो। which is called the particle flux। ये भी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला जा सकता है। तो मैं पहले एक्चुअली बोल रहा था एक चीज कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या क्या निकाल सकते हैं। तो उसमें प्रेशर हो गया, obviously the first thing is that you can calculate how hard the gas presses the walls of the container, and it's an important property to be able to calculate because it's a measurable property at a macro scale. So it can actually help you verify that all your reasoning up till this point, starting right from the definition of temperature, is correct, because ये तो verification है, यहीं पे आके ही तो फिर तुम उसके ऊपर पिस्टन के ऊपर वेट रखोगे और टेम्परेचर मेजर करोगे, क्योंकि अब ये पूरी मैक्रो इक्वेशन है, इसमें सब चीजें जो है मैक्रोस्कोपिकली मेजरेबल है। लेकिन ये अभी तक हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं, हम तो सिर्फ थ्योरी और अजम्पशंस ले लेके और मैथ लिख लिख के इसको लाए हैं। तो इन दैट सेंस इट्स आई मीन हिस्टोरिकली ऑब्वियसली ये पहले था, इन द सेंस कि जब तुम इस पॉइंट पे आ गए तो अब तुम्हें एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी इसको डिस्कवर कर लिया एक्सपेरिमेंटली। So people already know that this equation is correct, and so if you arrive at it from a theoretical background, then you know that all of your analysis up till this point was somewhat correct, or at least not very wrong, because you have found something which has also been discovered empirically. So it relates to reality, right? That's obviously the most historically significant use of the Maxwell-Boltzmann distribution. But also additionally, और भी चीजें कैलकुलेट करने के वो काम आता है, बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करने के काम आता है। जैसे कि एक चीज है पार्टिकल फ्लक्स, ठीक है। मैं और भी चीजें बता देता हूँ, तुम लोग थोड़ा सोच सकते हो कि क्यों मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन उन सब चीजों के लिए रेलेवेंट होगा। और अगेन कीपिंग इन माइंड दैट ये सारी चीजें मैक्रोस्कोपिक चीजें, अल्टीमेटली द होल आइडिया दैट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज दैट you start with like very simple ideas, point mass, freely able to move, collides elastically, equally likely to be headed in all directions, and then ideas about temperature where you said okay there are a number of microstates and macrostates, and didn't really take any very strong assumptions or kind of guided the whole thing just with very reasonable ideas. You have come to some kind of a distribution function, but now what you're trying to get out of the distribution function are properties of real gases which you can actually measure via experiment. So I mean pressure being the most in some sense the most important one of them, or the
probably the easiest to measure or the historically most significant one. But also other macroscopic properties, like if I puncture a hole in the container, how much of the gas will come out in a given amount of time? The rate, the leakage rate of the gas. How quickly will I be able to empty the container? How quickly the pressure falls if I have a certain hole in the container, a small hole in the container, or which has to do with this quantity called particle flux. ये मैं भी बताता हूँ क्या है. Yeah, something like if I have a gas and I heat one wall of the container, one face of the container, I maintain it at, let's say, 100 degrees, and I maintain one face, the opposing face of the container, at 0 degrees, then I would be able to calculate how much heat that would require, because that can be measured. जो मैं heater use कर रहा हूँ left side पे, वो कितना heat pump कर रहा है उसको 100 पे maintain रखने के लिए, is almost nearly the same heat that the gas carries. जो उन दोनों faces के बीच में जो gas है, वो कितना तेजी से heat ले जा रहा है hotter face से cooler face तक, right? ये एक category of phenomena है जिसको generally speaking बोलते हैं transport phenomena, in the sense of a gas is basically able to carry energy, it is able to carry momentum. So any phenomenon that have to do with the transport of energy or momentum over long distances are called transport phenomena. So energy का तुम देख रहे हो, basically this is, I guess you can see, conductions की बात हो रही है. But microscopically speaking conduction क्यों हो रहा है? क्योंकि अब गैस के अंदर एक टेम्परेचर का ग्रेडियंट बना हुआ है, और इधर के पार्टिकल जो हॉटर फेस को ठोकते हैं वो उससे एनर्जी पिक करते हैं, और फिर वो वापस आके इधर दूसरों से टकराते हैं और वो एनर्जी रैंडमाइज हो जाती है, बाकियों में फैल जाती है. लेकिन क्योंकि ग्रेडियंट बना हुआ है तो वो एनर्जी जो है वो कंप्लीटली रैंडमाइज नहीं हो रही है, वो उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और ये स्पीड से रिलेटेड ही है. अल्टीमेटली हाउ फास्ट द पार्टिकल्स मूव हैज टू डू विद हाउ फास्ट दे आर एबल टू कैरी एनर्जी फ्रॉम द लेफ्ट फेस टू द राइट फेस. So if I can use the Maxwellian distribution to be able to calculate, in essence, the thermal conductivity of the gas, that is what the property of the gas is called. It is called the thermal conductivity. But it has to do microscopically with how fast the particles move, and which will ultimately be controlled by the Maxwell-Boltzmann distribution, right? And this is a macro property because I know how much heat the heater is supplying to maintain the left face at 100 degrees Celsius relative to the right face. Probably the right face is some kind of a thing which I don't have to maintain. Maybe वो room temperature है ना, 27 डिग्री सेल्सियस, तो उधर तो मेरे को कोई एक्सपेंडिचर नहीं, कुछ नहीं. लेकिन अगर इधर वाले को मैं 100 पे मेंटेन रखना चाहता हूँ तो मेरे को कुछ एनर्जी पर सेकंड पंप करना पड़ेगा, तो वो मुझे पता है, कैलकुलेटेबल है. लेट्स से अज्यूमिंग आई नो व्हाट द हीटर इज लाइक एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द हीटर, हाउ मच एनर्जी इट यूजेस अप, व्हाटएवर. तो अज्यूमिंग दैट इज नोन, I can then verify whether the gas is actually transporting that much energy per second. And I can also calculate theoretically how much energy it ought to transport because I have the Maxwell-Boltzmann distribution, right? तो वो एक टाइप की चीज होगी जो कैलकुलेट करी जा सकती है. Similarly, momentum transport जो है, interestingly, गैस की विस्कोसिटी, अभी तुम लोग पढ़ रहे हो या पढ़ लिया हो, गैस की विस्कोसिटी जो है, गैसेस की विस्कोसिटी, वो मोमेंटम ट्रांसपोर्ट का गेम. बिकॉज लेट्स से यू टेक अ ऑब्जेक्ट, ये सब हम नहीं करेंगे डिराइव, बट दीज आर इंटरेस्टिंग थिंग्स. इफ यू वांट टू रीड अप फर्दर ऑन देम यू कैन. बेसिकली दीज आर ऑल कलेक्टिवली कॉल्ड ट्रांसपोर्ट फिनोमेना. सो इफ यू रीड सम slightly advanced book on gas kinetics, it will mostly be called this, but that's what they would be talking about there. कि गैस है इधर कंटेनर के अंदर, आई मीन किसी दो सरफेसेस के बीच में. नाउ आई वांट टू मूव दिस रिलेटिव टू दिस अदर फेस, मतलब ये फिक्स्ड है नीचे वाला और मैं इसको मूव करना चाहता हूँ. तो अब हो क्या रहा है कि माइक्रो स्केल पे, क्योंकि ये चीज रफ होती है, अगर तुम इसको जूम करके देखोगे तो ये रफ सा सरफेस है ऐसे करके कुछ, और गैस इधर है और बॉम्बार्ड कर रहा है उसको हर तरफ से, नीचे से और ऊपर से. अब जब तक ये चल नहीं रहा था तो ऑब्वियसली गैस के अंदर एक मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन था. some were fast, some were slow, they were randomly hitting from all sides. But once the whole thing starts to move, once the upper surface starts to move, then what happens is, इनिशियली क्या हो रहा था कि जब तक ये रेस्ट पर था तो जो लोग इसको इधर से पाउंड कर रहे थे और जो लोग इधर से पाउंड कर रहे थे वो ऑन एवरेज इसको कोई मोमेंटम नहीं दे रहे. आई मीन गिवन दैट इट्स ऑल perfectly randomized, that there were roughly speaking equal number of particles hitting it with equal amount of momentum from both sides, correct? But once it starts to move, I start to move it,
Why do I experience a resistance? Because once I start to move it, then this hit basically is a harder hit because of relative velocity, right? Because I mean, the gas is still moving in a sense at the same speed, but this hit is harder on the thing. These hits, these backward facing hits are harder because of relative motion between the gas particle and the solid object. And so I face a resistance. And if I don't want this object to slow down, I provide that force. So I keep it moving using my own strength, which basically means that these people who strike it on this side rebound with a higher speed compared to these people. These people slow down when they hit the gas because they're hitting a surface that is moving away from them. Right? This is the same kind of thing जो तुम मोमेंटम में पढ़ते हो, जबकि एक बॉडी है जो मेरे से दूर जा रहा है और मैं इसको हिट कर रहा हूँ, वो m1 v1 m2 v2 वाला स्टोरी. So it's like a spongy surface. You hit it and you are slowed down. But if you hit it coming head on, then you are sped up. So एक तरीके से क्या हो रहा है कि तुमने इस लेयर ऑफ गैस को जो तुम्हारे साथ कांटेक्ट में फर्स्ट लेयर, उसको एक मोमेंटम दे दिया है इस तरफ, नेट मोमेंटम. मतलब समझ रहे हो, एक मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही उधर, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट इज सुपरपोज्ड अ सिस्टमैटिक वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन. Everybody, I'm not saying everybody starts moving in this direction. They cannot all start moving in one direction. They will still be moving randomly, but they have both their Maxwellian velocity and this velocity which you have provided to all of them. They might have some random Maxwellian velocities, but they all have this additional velocity. And now what happens with that is the layer next to it, which initially was in a sense of a Maxwellian equilibrium with the layer above it, कि generally क्या हो रहा था कि layer के बीच में क्या होता था, that for every collision occurring this way, right, कोई पार्टिकल ऐसे इंटरलेयर कोलिजन कोई अगर होता था, ऑब्वियसली लेयर का डेफिनेशन आर्बिट्ररी है, स्मूथ प्रोसेस है, बट मैं कह रहा हूँ अगर दो लेयर बना के सोचेंगे तो फॉर एवरी हिट दैट इंजेक्टेड सम पर्टिकुलर मोमेंटम px from the top layer to the bottom layer, there would have been another hit elsewhere which would have injected a reverse px in that layer. Do you understand this point? Yes, sir. Right, and that would be happening between any two adjacent layers. So in general, there would be no momentum transfer across layers. But now that this layer, this particular layer, which was in contact with this solid, now has this additional velocity, then a hit of this kind basically injects that momentum, that extra momentum to this side. Even if you take the idea of an elastic collision, you know कि वो velocities exchange हो जाता है. तो obviously ये जो extra है ये इधर आ जाएगा और इस तरीके से ऐसे momentum transfer होगा इधर. Like you start moving this, but this is now a momentum transport gain. And ultimately that will be felt by this body, which will tend to start moving if it's not securely held or whatever. This is viscosity, right? Basically you try to move something and then there is a kind of a shear कह लो, shear तो एक generalized idea हो गया, but shear का जो ideal gas के अंदर basis है वो भी Maxwellian distribution से analyze किया जाता है. So essentially if you were able to do this analysis, you would be able to calculate what is called the coefficient of viscosity of the ideal gas by measuring how much force you are having to apply, which again is the macroscopic property, something you can probably measure or in some sense manipulate or do. Spring से लगा दिया तुमने, मान लो spring compress कितना कर सकता है, whatever, कुछ कोई graded quantity के against. So, and knowing the area of everything, knowing the separation and knowing everything else, you could in principle calculate the coefficient of viscosity of the gas. Similarly over here, you could in principle calculate the coefficient of thermal conductivity of the gas. So these properties, thermal conductivity, coefficient of viscosity, there is another thing called diffusivity. All of these are called transport phenomena. Particle flux is also a transport phenomena in the sense that you could say particle flux is literally mass. The transport of mass is particle flux, right? So it's also a transport phenomenon when literally the particle goes somewhere. I mean, so we are not really talking about it taking some energy or some momentum, but it itself just going. So that's a transfer of mass, like gas leaking out of a hole. That's a transfer of mass. So that's a mass transport phenomenon. Similarly, conduction is an energy transport phenomenon. Viscosity is a momentum transport phenomenon, right? So all of these are basically, it is possible to calculate these things based on just the Maxwellian distribution. And then of course you measure it for a realistic gas or a real gas and then see how close they are. And they are actually quite close. I mean, the theory is quite good in that sense. That's why we are studying it so many years later, is because it is actually pretty good. Matlab, once you take a real gas
and you measure its conductivity or its viscosity or its rate of leaking or whatever by experiment, and you do it via this whole business, they are actually reasonably good approximations. I mean, it's a reasonably good theory. ठीक है, तो हम ये सब तो नहीं कर रहे हैं, मैं बस जनरल आइडिया दे रहा था कि कंडक्शन, विस्कोसिटी, ये सब चीजें करना पॉसिबल है, बट हम नहीं कर रहे हैं. पार्टिकल फ्लक्स में क्विकली बताता हूँ, फिर हम इस पे एक प्रॉब्लम करेंगे. आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ बस ये, फिर नेक्स्ट टाइम हम प्रॉब्लम करते हैं इस पे. सर आपने आई थिंक ये हम लोग के थर्मो वाले लेक्चर में बताया था शायद, पार्टिकल फ्लक्स वाला. हाँ, हो सकता है मैंने बता दिया होगा, मैं फिर भी ब्रीफली बता देता हूँ. कुछ बताने का नहीं है, बस मैं क्विकली बताता हूँ कि इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रेशर का लॉजिक तो एक्सप्लेन कर ही दिया है. तो पार्टिकल फ्लक्स जो है सिंपली इज द आइडिया दैट ये literally if you go back to this thing which I said, right here, you calculated this quantity, right? You calculated the number of particles coming at a certain speed and coming at a certain angle, and then you multiply to the volume factor to get the absolute number of particles coming at a certain speed and coming at a certain angle, right? When you multiplied mv cos theta to it, that made it the momentum coming at v and theta, and then when you aggregate it, you get the total hit, total momentum across v and across theta on the unit area. If you skip this step, if you skip the momentum multiplication step, if you don't multiply mv cos theta and integrate before, already तुम्हारा n fb dv और ये sin theta d theta by 2 जो एंगल का पार्ट है, और एक वॉल्यूमेट्रिक पार्ट कि कितने पार्टिकल वहां तक पहुंच जाएंगे उतनी देर में, तुम अगर इसमें से ये ड्रॉप कर दो, mb cos थीटा को ड्रॉप करके इंटीग्रेट कर दोगे, तो ये आ जाएगा लिटरली कितने पार्टिकल इस पे टकरा गए पर टाइम, चाहे वो किसी भी स्पीड और किसी भी एंगल पर आ रहे थे. करेक्ट? मेक सेंस? यस सर. और अब अगर ये वॉल का पैच खुला हुआ होता, तो दैट इज ऑल्सो लिटरली हाउ मेनी पार्टिकल्स वुड हैव एग्जिटेड द कंटेनर, right? I mean, the idea of flux is not really about how many particles exit the container. The idea of flux is a general idea that you take a unit area somewhere in the container, just a bunch of particles, and you say, what if I held up a unit area somewhere? Then how many particles would be crossing that per time? That's called particle flux. इसका symbol phi होता है, flux का symbol phi होता है across topics. तो कितने पार्टिकल इस एरिया को, यूनिट एरिया को पर सेकंड क्रॉस करेंगे गोइंग इन वन डायरेक्शन, इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो ईदर यू पिक लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, राइट? दैट्स कॉल्ड पार्टिकल फ्लक्स. करेक्ट? And but if you take this area onto a wall, then you can talk about how many particles hit a particular area on the wall, a unit area on the wall. And if you open up that unit area, then you can talk about how many particles exit a whole of unit area. And if you say it's not a unit area but an area of A, the whole has an area A, then you just simply multiply that number with A, the area of the whole, to get how many particles leave the container per time. Make sense? तो अगर उसी स्केल, उसी लेवल पे इंटीग्रेट कर देते बिना ये मोमेंटम मल्टीप्लाई किए हुए, तो तुम्हें फाई मिल जाता. फाई की वैल्यू जो होती है वो 1/4 n v एवरेज होती है. मतलब ये उसका आउटकम है, उस इंटीग्रल का आउटकम है जो हम नहीं कर रहे हैं, बट बेसिकली दैट्स व्हाट इट इज. लोग समझ गए? यस सर. That's called particle flux. ठीक है? n is the number density, meaning how many particles per unit volume. Small n is always number density. Small n वैसे जब केमिस्ट्री के लेवल पे पढ़ रहे होते हैं तो small n नंबर ऑफ मोल्स होता है, क्योंकि वहां पे मोल जो है ज्यादा फंडामेंटल यूनिट होता है. लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम बहुत पार्टिकल लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो स्मॉल एन यहाँ पे होता है पार्टिकल नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बट पर यूनिट वॉल्यूम. कैपिटल एन होता है टोटल इन द कंटेनर. ठीक है? तो बेसिकली जो n है वो n टाइम्स v ऑफ कंटेनर होता है, राइट? तो अब यहाँ पे खत्म करते हैं. नेक्स्ट टाइम हम वो प्रॉब्लम करते हैं, एक अच्छा प्रॉब्लम है. विल गिव यू सम प्रैक्टिस इन दीज टॉपिक्स जो हमने आज डिस्कशन किया है, बेसिकली वी आर एम एस, वी एक्स का एवरेज और इसका एवरेज विद सम अप्रोक्सीमेशंस इन्वॉल्व्ड इन समथिंग. सो वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. ठीक है? एनी क्वेश्चन? ठीक है, चलो फिर. ऑल राइट, गुड नाइट. थैंक यू. थैंक यू सर. Thank you. थैंक यू सर. थैंक यू. बाय बाय.